I will give you access to this page, to this Chrome ID. You need to log in here, and then you will have to open two things: tag manager.google.com, right? You will click on here, and once this opens, then you will click on here, right? Once this opens, ये सबसे पहले एक इशू दिखाई देगा, कंटेनर क्वालिटी नीड्स अटेंशन, view issue, right? You will click on here, then you will click on see untagged, and this list will open. This is one. Next, in another tab, you will open analytics, analytics dot google.com, राइट? ये सब यूआरएल मैं इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा. ओके, सो एनालिटिक्स डॉट ये जब खुल जाएगी, देन यू विल गो टू द bottom admin gearbox. You will click there, then you will go down this data display के सबसे नीचे लिखे लिखा हुआ होगा debug view. You will click on here. Now let's see, again go back to Google tag, and you see this gcentricsaboutus.tech. You copy this and you paste this, right? So this page, now you click this, go to the tag manager page again, and you can close this, you can close this, and then you can click on preview प्रीव्यू में जाके यहाँ डिलीट करके ये वाला यूआरएल, द वन विच यू वांट टू, विच यू जस्ट कॉपीड, इसको कनेक्ट करना. जब ये कनेक्ट करेंगे, राइट, फिर हम फिर से एनालिटिक्स में जाएंगे और डिबग व्यू को रिफ्रेश करेंगे. हम डिबग व्यू को रिफ्रेश करेंगे, राइट? जब हम ये रिफ्रेश करेंगे, वी विल कम बैक टू अगेन गूगल टैग मैनेजर, राइट? उसको कंटिन्यू कर देना. अच्छा, दोबारा टैग मैनेजर खोलना पड़ेगा. इनफैक्ट एक दूसरे विंडो में ये वाला स्क्रीन टैग मैनेजर का खोल के रखना, 2 बार टैग मैनेजर खोलना अपने टैब. एंड इफ यू क्लिक ऑन व्यू इशू, एंड इफ यू क्लिक ऑन सम tags, now you will find, if I refresh this, अब मैं इस पेज में सिर्फ जाके नहीं, आई थिंक आई नीड टू स्क्रॉल. यस, ट्राई टू scroll this page and again come to analytics and check, and then you go back to tag manager का राइट, वो वाला रिपोर्ट वाला पेज. 1 सेकेंड, कहाँ चला गया? हाँ, ये व्यू इशू सी untagged. Yes, you see, about us page is now tagged. It was earlier appearing untagged. So we need to scroll this page ऊपर नीचे. We need to go to analytics and refresh it again, right? We need to do that, and then we need to do that, and then we need to check this. अच्छा, यहाँ पर हमें टैग मैनेजर का ये पेज भी एक खुल के रखना, और दूसरा विंडो में टैग मैनेजर डॉट गूगल डॉट कॉम दूसरा विंडो में भी खोल लेना, राइट? इसको बंद कर देता हूँ मैं. दूसरा विंडो में भी खोल लेना टैग मैनेजर. एक यहाँ खोल के रखना, एक दूसरा विंडो में खोलना, वहाँ इसमें क्लिक करना जेसेंट्रिक्स में, और वहाँ
प्रीव्यू वाले इसको खोल के रखना, राइट। ये जिस पेज का हो जाए उसको हटा देना, एंड देन दूसरा पेज का यहाँ पर से फिर लेना है। नाउ आई ओपन अगेन, ये वाला क्लिक करूँगा। अब मैं आई विल टेक द नेक्स्ट पेज, gcentrics.cto सर्विस, ये गया। इसको मैं एक टैब में खोल लिया, राइट, सीटीओ सर्विस। अब मैं गया दूसरे वाले में जहाँ मैं एक और, अरे ओ एक जगह कर रहा हूँ तो सॉरी, दोनों विंडो, आई थिंक एवरी टाइम यू हैव टू क्लोज एंड ओपन, राइट, that is though tab is not working. So I will again go here, I will go on this, achha, this is not opening, gcentrics, mm, https connect, then I will go and scroll this page slowly. I will scroll this page slowly, then I will come here and I will refresh this and I will check क्या हुआ, and then when I go back to uh, हाँ, I need to now again see, नहीं हुआ, I will refresh. This is CTO service we are doing, right? I will again refresh, again check this, again connect. अरे ये तो कर चुका हूँ, हाँ तब भी कर लेता हूँ एक बार और। Again I will check, or then I will go to analytics, then I will check this. वो डेटा स्ट्रीम जब तक काम नहीं करेगा वो वहाँ से वो हटेगा नहीं, राइट। और ये एक बग है, इसके लिए अब जब मैं यहाँ पर दोबारा चेक करने जाऊँगा, अब मुझे देखना है सीटीओ सर्विस पेज टैग्ड हो गया कि नहीं। अभी तक नहीं हुआ, राइट। अगेन आई डू, अगेन आई क्लिक हियर, अगेन आई डू, 4 ही में है, हाँ सीटीओ सर्विस हो गया। सो दिस वे we will have to carry forward and do this all, right? So please help me get this tagged.